So construction chapter and we are going to start with what we are going to do in 10.4. We have done construction in the previous case. What we see, we did the construction when all the sides of the yeah, and the next what we have seen when we have done the construction in one and two sides, right? And other in one we have learned how to go line pattern. Then three sides constructed. Then two side and triangle constructed. And in triangle how to construct two angles and how to construct using the concept of right angle. And this section यस मैम 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 गौरी सर ना दिवांग की क्लास लग नहीं रही है मैम बहुत बच्चों की क्लास नहीं लग रही yes what do you say मैम दिवांग और गौरीश की मैम दिवांग और गौरीश की क्लास लग नहीं रही है मैंने तो बेटा enable किया हुआ है I haven't logged the meeting there might be some मैम कॉल कर रहा है मैम there must be some network issue with them because I admitted all and moreover I disable the waiting room also enable the waiting room also and moreover meeting is not logged मैम लग गई might be some issue with their network problem मैम लग गई उनकी क्लास okay Anji Shubh what do you want to say Shubh मैम आपके बच्चे मैंने माइक अभी लगाया शायद इसलिए आपको लगा होगा नाउ इट माइट बी ओके ठीक है ओके मैम so now we will learn that how to construct a triangle with a how to construct a triangle with one angle 90 degree hypotenuse and one side. Remember it like RHS. One right angle, one hypotenuse, one side. When we are given one right angle, one hypotenuse and one side, how to draw the triangle? Let us see. RHS rule बोलते हैं इसको. Right angle, hypotenuse and side. First of all, let me tell you something about right angle triangle. Right? So suppose I am having a right angle triangle. मैंने roughly side बनाया. In this right angle triangle, these three sides they are having some specific name. इन तीन sides का कुछ specific name होता है. Let me tell you what that specific name is. The side on which right angle triangle is standing is known as base. जैसे कि I am right now I am standing on earth. Earth is my base, right? The thing on which person is standing that is called base. Similarly, the side on which right angle triangle is standing that is called the base, right? This 90 degree associated with base. Base के साथ जो 90 degree associate होता है उसको हम बोलते हैं perpendicular. Perpendicular. This is perpendicular. Base के साथ जो 90 degree associated होता है उसको हम बोलते हैं perpendicular. जैसे कि right now I am standing on earth. Earth is my base and myself is perpendicular to earth because I am standing on the earth at the angle of 90 degree. Had it been I am standing like this, ऐसे अगर मैं tilt होके खड़ी होंगी तो 90 degree का angle नहीं बनेगा and moreover I would not be able to stand for a long time. I have to stand at 90 degree only. Only then I can stand for a long time. Is it okay? So 90 degree perpendicular. One is base associated with base 90 degree. This is perpendicular. Is it okay? Right? Now one side is left. You know how to detect this side?
This side is always opposite to 90. हमेशा 90 के सामने होगी ये साइड. This side is always opposite to 90. Always remember that this side is opposite to 90 and its special name is hypotenuse. If someone is asking you that which side of triangle you will regard to be hypotenuse, your answer will be side opposite to 90 degree is hypotenuse, and on which the triangle is standing is base with a 90 degree angle. Base के साथ जो associate side है उसको क्या बोलते हैं? Perpendicular. So these three things should be known to you before starting the construction of a right angle triangle, right? So 10.5 exercise I am going to start. Construct a right angle triangle PQR. Triangle PQR in which construct a right angle triangle PQR in which angle Q is 90 degree. QR is equal to 8. QR is equal to 8 and PR is equal to 10. Angle Q 90 degree, QR is equal to 8 and PR is equal to 10. Yes, Harmeet Singh. मैम जो आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है मैम, और ए और बी के बीच में क्या लिखा है आपने? Perpendicular. AB is perpendicular. This is base. This is hypotenuse. Is it okay, Harmeet? Harmeet, is it okay? बच्चे respond. Reaction. Is it okay? No reaction. So anyhow, Q is 90 degree, QR is 8 and PR is 10. These are given to be the sides of the triangle. Dimensions, measurement. These are the measurements. So first of all, we'll make rough sketch. Rough sketch. You know, Q is 90 degree. आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, जो हमने बेस पे साइड लेनी होती है, that side is to be taken on which angle is given. If I take PR on base, अगर मैं PR को बेस पे ले लूं तो मेरा एंगल तो Q है, एंगल कहाँ बनाऊंगी? एंगल is to be made at Q, so I have to take QR at the base. पहले तो ये बात याद रखना, बेस किसको लेना है? जिसपे हमें एंगल गिवन है, एंगल Q 90 है, so we'll take QR at QR is 8. Then we will construct 90 degree at Q. हमने Q पे, हाँ जी देवांग, आप क्या पूछना चाहते हो? What do you want to ask? मैम ये वाले सबसे पहले कुछ कराया तो नहीं आपने? मतलब यही है सब किया था कुछ, क्लास में? यही है. Put your hand down. चलिए. So at Q you have to make 90 degree. We'll construct it fair way. अभी मैं रफ में बता रही हूँ. 90 degree and PR here somewhere will be P. PR is 10. You will put the compass at R and mark 10 centimeter R. This will be P. This is P. This is right angle triangle PQR. This is its rough sketch. Now I would like to start with the fair sketch. You will make it side by side. Fair sketch. While making fair sketch, you have to keep one thing in mind, that your rough sketch is going to help you a lot. This is QR 8 centimeter. Take up the scale and mark a line of 8 centimeter length. Mark a line of length 8 centimeter. Mark QR to be 8 centimeter like this. Make it side by side. QR 8 centimeter. Now at Q, what do you want to draw? You will draw 90 degree, and we all know so many times we have made 90 degree right now, na? So Q पे 90 degree.
With suitable radius, you will open the compass, keeping the needle at point Q, marking an arc. Protector बनाओगे पहले, ये बनी हमारी protector. Q के लिए first of all sign of protector is to be there. Then cut 60 degree, cut 120 degree from 60. 60 से 120. 60 and 120 के बीच में ये जो एंगल है from here one arc is from here, another arc is from here. Right? So this way you will get 90 degree. Mark it to be X. This way you will get 90 degree and mark it to be X. Now your PR is 10 centimeter. That means you have to open the compass of length 10 centimeter. Right? Keeping the needle at the point R, cut an arc over here. Ten centimeter arc is. This is point P. This is your point P. Join PR. This is 10. 10 centimeter. So you will be having steps of construction. Steps of construction. First point, draw QR is equal to 10 centimeter. Draw QR is equal to 10 centimeter. At Q, draw एंगल आर क्यू एक्स. क्यू सेंटर में आना चाहिए. ड्रॉ एंगल आर क्यू एक्स. हाँ जी हरमीत सिंह. Harmeet Singh, hurry up, unmute yourself and ask your doubt. चलिए. यस मैम. मैम जो आपने फर्स्ट में मैम ड्रॉ क्यू आर लिखा है मैम वो 8 सेंटीमीटर है. हाँ जी वो 8 सेंटीमीटर है गिवन है. मैम आपने 10 सेंटीमीटर लिखा है. 8 ही लिखा है बेटे. 8 सेंटीमीटर ही है. मैम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कह रहा हूँ. ओके बच्चे थैंक यू. ड्रॉ एंगल आर क्यू एक्स इक्वल टू 90 डिग्री. थर्ड, taking R as center, draw an arc meeting QX at P. Join PR. Join PR. Triangle PQR is required triangle. Triangle PQR is required triangle. अब एक चीज दिमाग में रखना, मैंने आपको जब परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बारे में बताया, आई एम टेलिंग यू कि QR is to be taken at bottom by using this concept that angle Q is given to be 90. एक चीज और याद रखनी है आपने. Two sides are given. One is QR, another is PR. दोनों में से बिगर कौन है? Gorish, Q and R, PR, both two sides are given. Which one is bigger? Ma'am, PR. PR, 10 centimeter. And always remember, in a right PR, ma'am, PR. in a right angle triangle,
हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, आपका हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। एम आई क्लियर? ओके मैम। बेस यस मैम। यस मैम। जो एंगल 90 जो है वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर नहीं बन सकता। ये दो चीजें सोच के मैंने क्यूआर को नीचे लिया। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, 90 के ऊपर हाइपोटेन्यूज के ऊपर 90 डिग्री बन ही नहीं सकता, बेस के ऊपर बन सकता है, तो मैंने क्यूआर को नीचे लिया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके थैंक। Let us start with the next second question. Second question. Second question is, construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long. Hypotenuse is 6 centimeter long. One of the legs is 4 centimeter. One of legs मतलब आर्म ही बोलते हैं उसको, जो स्टैंड होती हैं वो बोलते हैं लेग्स, आर्म। This is given to be 4 centimeter. पहली बात तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इट विल बी लाइक दिस, नेम भी रख लो, रफ स्केच। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो नेम भी रख लिया मैंने। अब आप लोग मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ क्या होगा। 90 डिग्री कहाँ पे होगा जो मैंने ड्रॉ किया उसमें, साबिया? whatever rough sketch I have drawn, where मैम बी पर B, angle B is 90 degree. मैम Right? बी B पे 90 डिग्री होगा, शाबाश। सक्षम स्मर्थ, अनम्यूट योरसेल्फ। सक्षम स्मर्थ। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो 6 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज, ये कौन सी साइड होगी? एसएस ब्रदर्स। यस मैम। मैम एसी। एसी। वाई सो? ठीक बताया आपने, वाई सो? मैम राइट एंगल में जो हाइपोटेन्यूज एंगल है वो एंगल का मैम क्या किया, हाइपोटेन्यूज वो राइट एंगल के एकदम सामने होता है। बिल्कुल ठीक, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होता है, दैट मींस एसी मस्ट बी 6, लेफ्ट इज 4 रह गया। अब आप हरमीत 4 कहाँ पे लोगे? यस मैम। 4 एबी पे लोगे कि मैम बीसी? 4 इज मैम बीसी। बीसी पे लेंगे। रीजन इज जहां पे एंगल ड्रॉ करना है वो हमारे पास होना चाहिए, तभी एंगल बन पाएगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन एबी, कुछ बच्चे कहते हैं वन ऑफ द लेग है तो एबी को क्यों नहीं लेते मैम? जहां पे 90 डिग्री ड्रॉ होगा वो साइड हमें चाहिए होती है, सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेक बीसी हियर। दिस इज अ रफ स्केच, लेट अस स्टार्ट द फेयर स्केच। फेयर स्केच, draw BC equal to 4. Draw BC equal to 4 centimeter. In the same way as we have drawn in the previous case, we have to draw the angle of 90 degree at B. So let us draw it in the same way, keeping the needle at the point B, cut an arc, that means we are making a protector. Now keeping the needle here, 60, 120, one arc from here, another from. This way you are moving 90 degree. Call it to be X.
call it to be x. Hypotenuse is 6 centimeter. That means this side 6 centimeter. So you have to open the compass of length 6 centimeter. Keeping the needle at the point C, mark an arc like this. 6 centimeter. This point that you are getting, this is going to be your A. This is going to be your A. Join AC. Harmeet Singh, you want to ask something? No, तो hand down करो अपना. Raised hand, they distract me. I feel मैम जो समझ मैम नहीं आ रहा. आईपोड मैम जितना आईपोड न्यूज होता है मैम उतनी ही हमें कंपास खोलनी होती है. हाँ जी, उतनी कंपास खोलना जितना हाइपोटेन्यूज गिवन है. Steps of construction first. Draw BC equal to 4 centimeter. Second, at B, draw angle CBX equal to 90 degree. Taking C as center, draw an arc meeting BX at A. Join AC. Triangle ABC is the required triangle. Triangle ABC is the required triangle. Triangle ABC is the required triangle. How to construct a triangle with one angle 90 degree, hypotenuse and one side. Second exercise we learned how to construct a triangle with 3 sides, 3 given sides. Third exercise we learned how to construct a triangle when two sides and angle between them is given. Fourth exercise we learned how to construct a triangle when two angles and one side is given. And in fifth exercise we are learning how to construct a triangle with 190 degree hypotenuse and a side. Let us start with question number 3. Rough sketch is very important. You please mind it. If you are making rough sketch correctly, then your fair construction is going to be okay. Okay, so make the rough sketch very minute. Construct an isosceles right angled triangle in which ABC, triangle का नाम है ABC, in which angle ACB 90 degree and AC is equal to 6 cm. This is something different that I am going to teach you. Question number 3. Listen. मैं suppose roughly इसको बना लूं. Right angle C पे है. Now tell me where I should write C. First of all, Shubh will tell me. Shubh, where I should write C in the rough sketch? Yes, ma'am. Where should I write C? Ma'am, A at the top, B at the angle, and C on the right ये side. आप C के बारे में बताओ. C कहाँ है? A B को छोड़ो.
Where I Ma'am, should write? C on the right side of, But speak once again. ma'am, right side of, Once again, please. ma'am, Ma'am, he is saying right side. C कहाँ बनाना है? C कहाँ लिखूं? मेरे को अभी तक अच्छे से सुना नहीं है. Jasmine, you tell. Jasmine, ma'am, I think left side. मेरे को अभी भी नहीं ठीक से पता चल रहा है. Jasmine, क्या कह रहे हो आप? मैम at angle. मैम कहना है Ma'am, left. Vaibhav, you tell. Yes, ma'am. Ma'am on ma'am right side. Ma'am on the right Ma'am, angle triangle. Where the right angle is? That means at C. ACB is 90. So C यहाँ पे हो गया. ACB is like this. Now tell me where I should mark A. Harmeet Singh. मैम top. Top पे मैम at top. AC6 है, देख लो. अगर टॉप पे चला गया तो नीचे वाली साइड को मैम नीचे. बॉटम पे A, क्योंकि हमें AC6 पता है. And let it be B. AC is 6. You know, in isosceles triangle, two sides are equal. है ना? दो Yes. साइड्स इक्वल होती है. Yes, ma'am. अगर ये 6 हुआ तो ये भी क्या होगा? 6. हम तक ये सोच सकते हैं कि दो साइड्स इक्वल हैं तो मैम इसको भी इक्वल ले सकती हूँ. बिकॉज इट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट. तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, इनका सम सुम करके हाइपोटेन्यूज बड़ा आ जाएगा. तो बेटर है कि हम BC को 6 ले लें. ठीक है? So this Yes, is ma'am. a rough sketch in which you should mark C point, A point and B point very carefully. Only then fair sketch is going to be okay. Rough sketch is okay to all of you? चलो फिर Yes, hand. ma'am. Put your hand down. चलिए. First of all, draw. यहाँ पे CA लिखा हुआ है तो CA ही लिखेंगे हम. One of the same thing, ACCA. Draw CA equal to 6 cm. Making 90 degree at C. Making 90 degree at C. Previously we have made in the same way we are making it again. Making 90 degree at C. C angle is 90 degree. Let it be X. Along this CX, we have to cut an arc of 6 centimeter. C center 6 centimeter arc like this. This point is B. Join AB. Join AB. This is your rough sketch. This is your rough sketch. Steps of construction first. Draw AC equal to 6 centimeter. At C, draw angle A is equal to 90 degree. Taking C as मैम हमने जो बी भी 6 खोलना है. हाँ जी, मैम भी 6 ही खोलना है. तो ये साइड 6 है तो 6 ही खोलोगे C पे रख के. Okay.
But this time you are keeping the needle at the point C, not at A, because BC is to be made. Right? Taking C as center, draw an arc. एक्सक्यूज मी मैम, तो मैम जैसे जो BA होगा फिर मैम जो BA होगा फिर जो वो तो 6 सेंटीमीटर से लाइक अबव आ जाएगा ना बड़ा ही आएगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, आपने भी किया नहीं है। मैम। आपने लाइक पहले बोला था कि हम इसको भी 6 कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपने बोला था इसको भी 6 कंसीडर कर सकते हैं। When two equal sides are given, we are taking it aside hypotenuse. Hypotenuse को छोड़ के जो sides होती हैं उनको लेते हैं, ठीक है? यस मैम, Draw an यस arc मैम। of 6 centimeter meeting CX at B. Join AB. The ABC is required triangle. ABC is required triangle. So this is all about with exercise 10.5, right? So our syllabus is almost finished. One chapter is left, I think, that has been deleted. Let me discuss with the other teachers. Then tomorrow I will tell you that whether to start with the next chapter, assignments, whatever, right? Is it okay? यस मैम। ओके मैम। Anji, Savya, what do you want to say? Savya? मैम मैंने ये कहना था कि थोड़ा सा मैम साइड हो जाओ, वो दिख नहीं रहा था प्लीज। Note it down. Chaliye, this is all about for today's lecture. So I'm going to end it. Tomorrow we'll meet again. हम 1 मिनट। And new मैम 1 मिनट। period is over. I have to go to my next class. So, steps of construction. So now you can write yourself also. So many times. I'm done.